Hello students, today we are going to discuss the topic sickle cell anemia. So this disease known as sickle cell anemia, why we are calling it sickle cell? Because here the RBCs, the red blood corpuscles, their shape changed into sickle. सिक्कल जो दराती जो किसान लोग खेतों में यूज करते हैं उसको हम सिक्कल बोलते हैं. तो सिक्कल की जैसी आरबीसीज हो जाती हैं. So that this disease is known as sickle cell anemia. And this disease is autosomal recessive disease because the defected gene that is present on the autosomes, not on the sex chromosome. We have discussed the topic that is the color blindness and the hemophilia. So in case of color blindness and hemophilia, both are the X-linked disorders. But here this sickle cell anemia, that is the autosomal recessive disorder because that gene, the defected gene is present on the autosomes. Here we can take the example that is HbS and HbA. So this Hb represent the hemoglobin, and if S means the sickle cell, when the hemoglobin, what is hemoglobin? Hemoglobin, that is the respiratory pigment in case of RBCs. This hemoglobin is present in the RBCs, and this hemoglobin can bind with the oxygen, so help in the transport of oxygen in our blood, because the transport of oxygen that is done by hemoglobin. So it is the respiratory pigment, and the pigment present in our muscles that also help to transport the oxygen, myoglobin, and present in RBCs, hemoglobin. So globin means these are the proteins. What are these? These are the proteins. So hemoglobin molecule, that is a protein, and that protein is formed by a particular type of gene, because gene code for a particular type of protein, and these genes are present in the chromosomes, and chromosome is made up of DNA. So in the DNA the base pairs are there, the nucleotide sequence are there. Simply if I am drawing the diagram of the simple double-stranded DNA, that is the double-stranded DNA. And in this double-stranded DNA, different base pairs are there, like A, G, C, T. So these are the base pairs, and these base pair join A combined with T, G combined with C, C combined with G, means there is the combination of the purines and the pyrimidines in the DNA. But in case of RNA, what is there? In case of RNA, at the place of thymine, uracil is there. So what happened in this disease? Because this DNA is there, and when this DNA replicate, it form the other DNA, and the central dogma is there. What is central dogma? Means DNA से क्या बनेगा? RNA, और RNA से क्या बनेगा? Protein. And this hemoglobin, that is a type of protein. So it is formed from mRNA. और mRNA को हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर RNA. और वो किससे बनेगा? इस DNA से बनेगा. इस DNA से जब RNA बनेगा उसको हम बोलेंगे mRNA. और इस mRNA के ऊपर क्या होगी? सीक्वेंस होगी, कोडॉन्स होंगे इसके ऊपर, और ये कोडॉन्स कितने किस फॉर्म में होंगे? ट्रिपलेट की फॉर्म में. लाइक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं GAG, लाइक ये सीक्वेंस है हमारी GAG. तो इस mRNA से क्या बनेंगे? प्रोटीन. और ये हमारा हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है. और तो इस प्रोटीन को के लिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड देयर इज द अमीनो एसिड की क्या होगी? एक चेन होगी, बिकॉज देयर इज द पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन द अमीनो एसिड, like one amino acid, second amino acid, third amino acid, fourth, fifth, and
there is the peptide bond between these amino acids, and this chain is known as polypeptide chain, and this polypeptide chain give rise to a protein. So now let us discuss the structure of hemoglobin. So in the hemoglobin there are the two chains. One is the alpha chain, like that is the structure of the hemoglobin. So there are the two chain, alpha chain and the beta chains. So these chains are the polypeptide chain, like this. And what happened in this polypeptide chain, at the 6th position there will be the replacement of single codon, and if that replacement is there, that single codon is replaced, then the particular different type of amino acid is formed, because now codon sequence is changed and different types of protein is formed. And if different types of protein is formed, then the structure of hemoglobin also change, and if the structure of hemoglobin change, then the shape of the RBCs that change into from round shape by concave shape to the sickle cell. So let us discuss with the help of the example like the sickle cell anemia, and point mutation takes place. So let us discuss with the strand of the mRNA. So let us take the example. So in case of the normal hemoglobin, the normal beta chain of hemoglobin molecule, what happened? Suppose here is the sequence, and this sequence is present in the DNA. Suppose GAG. This sequence is present on one strand, and on the second strand of the DNA, this sequence is there C, T and C, because G combined with C, cytosine, adenine combined with thymine, and G combined with cytosine, guanine combined with cytosine. So firstly try to understand the central dogma. What is central dogma? Central dogma term was given by that Watson Crick, जो क्रिक था जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, उन्होंने ही सेंट्रल डोग्मा बताया था। और सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए। और अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे हम इस प्रोसेस को? डीएनए रेप्लिकेशन। और जब इस डीएनए से आरएनए, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए, और कौन सा आरएनए? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो आगे टेम्पलेट का काम करेगा प्रोटीन बनाने में। और उस आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। और ये तीनों प्रोसेसेस हम अपने चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? हियर वन थिंग इज रिटन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। सो व्हाट हैपन कि जो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और दूसरे स्ट्रैंड पे ये सीक्वेंस है, तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, जब इस डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस थी एमआरएनए के ऊपर GAG। तो जो GAG है ये नॉर्मल सीक्वेंस है, और जब इससे प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगा, तो ये GAG कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड, एंड दिस ग्लूटामिक एसिड इज अमीनो एसिड। और जो अमीनो एसिड की जो चेन है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, जिससे क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे। तो हम यहाँ नॉर्मल हीमोग्लोबिन की पेप्टाइड चेन, जो बीटा चेन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, अगर उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आता है तो दैट इज द नॉर्मल चेन।
और अगर ये नॉर्मल चेन होगी तो जो आरबीसीज की स्ट्रक्चर है दैट विल ऑल्सो रिमेन नॉर्मल. बट व्हाट हैपन, second case we can take. So here if this, you can say this a is replaced by u. अगर जो a जो है वो क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए जिस GAG. अब इसमें जो ये a था ये किससे रिप्लेस हो गया, u से. ये रिप्लेसमेंट हो गई GAG की, किससे रिप्लेसमेंट हो गई, GUG से. जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं, सिंपल यही केस ले सकते हैं, GAG है तो यही सेम आएगा CT और C. लेकिन हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, A को हमने रिप्लेस करना है किससे, U से. तो अगर ये A रिप्लेस हो जाए किससे, U से, सो दैट कोड ऑन GUG एंड हेयर व्हाट वाज देयर, GAG. तो GAG किसको कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड को, और GUG किसको कोड करेगा, वैलिन को. और अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 6th पोजीशन पे क्या आ गया, वैलिन. तो इससे ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो चेंज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. एंड ड्यू टू दैट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन द cell change into sickle and sickle cell anemia is there. So here only a single base pair is replaced. So this is also the example of point mutation. If this question come, give the example of point mutation, so you can take the example of sickle cell anemia. Now we will discuss the normal condition, what will be the shape of the hemoglobin or in the carrier form, or if affected is there, so we can take another example. So this sickle cell anemia, it is the autosomal recessive trait and it can transfer in the next generation when both the parents, the male and the female, the father and the mother, are the carrier for that disease. So suppose this is the normal condition. So here the normal hemoglobin is there, or the next both are the sickle cell, so that is the disease, and here the carrier, so carrier is there. So we can take one example like the parents, father, mother, and because it is the autosomal disease, so there is the no need to take X and XX and XY here. So we will representing it with hemoglobin A, and if both are the carrier for that, suppose HbA and HbS. So this condition is for the carrier. Father is also carrier and mother is also carrier. Then the gametes HbA, HbS, and here HbA and HbS. So now the progeny will be HbA, HbA. Second condition HbA and HbS. Third condition HbS and HbA. And fourth condition is HbS and HbS. So what happened? The normal individual there, here one carrier, here also one carrier, and that is the disease. So most of the time these questions come, what will be the percentage? So by calculating this you can tell what will be the percentage of the disease or what will be the percentage of the carrier. So you can solve the problems of pedigree analysis also by the sickle cell anemia.
So that was about sickle cell anemia. I think you understood this topic. Thank you.